Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are doing well. So we already completed 3 chapters successfully, right? Now today I'm going to start chapter number 4 of computer subject. So what is the name of this chapter? Parts of a computer. What is the name of it, students? Parts of a computer. That computer के कौन से parts है, ठीक है? So let's begin it. सबसे पहले मुझे बताओ that in this picture you can see different parts, and already in the first chapter, second chapter, third chapter, so many times I explain you and show you the name of these all parts. Do you remember, students? Yes or no? If no, if yes, then very good. If no, then again I show you the name of these all parts. So let's see. What is the name of this first part? We call it monitor. क्या बोलेंगे उसे? Monitor. We not call it computer. हम जो ये सिंगल डिवाइस ये पार्ट है, सिंगल पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉनिटर, नॉट कंप्यूटर. कंप्यूटर किसे बोला जाता है? आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स. सो दिस पार्ट इज नोन एज मॉनिटर. नाउ दिस वन इज नोन एज कीबोर्ड. वी कॉल इट माउस. दिस इज अ प्रिंटर. दिस वन इज अ CPU, and this one is a speaker. Okay, repeat it. Monitor, keyboard, mouse, printer, CPU, and speaker. Yes, and yes, students, in this video today I'm going to tell you the spellings of these parts also. So now you all know the name of these parts, but do you know the spelling of this part word or a part name? No? Let's see. I will tell you in a minute. Okay. So as we have a different parts in our body, आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में different parts है. Look at this in this picture that you can see different body parts like a neck, and when it is pointed out also, neck, shoulder, chest, back, arm, elbow, hand, fingers and thumb. This all are different body parts. Okay, वैसे ही just like that there is a computer parts also. So a computer has also many parts. Computer also has many parts. See, one more time I tell you what we call it. Monitor. This one is keyboard. This is mouse, printer, CPU and speaker. Understood, students? Monitor, keyboard, mouse, printer, CPU and speaker. These all are parts of a computer. Now, all these parts work together to do any work in a computer. Now, look at this. In this picture, you can see that all parts are separate. यहाँ पे सारे पार्ट सेपरेट है. नो वन इज कनेक्टेड विथ ईच अदर. एक भी किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, राइट? बट लुक एट दिस. In this picture, you can see that 4 parts connected with each other with this wire. You can see this wire? Yes. So this all parts wire connected with CPU. Even ऐसा नहीं है, सारे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स है, सबके सब पार्ट्स को हम किस में कनेक्ट करेंगे? इन अ
CPU. Okay, students. So in a CPU, we have to connect all parts. Okay. Now, when all the parts connect with each other, then this become computer. क्या बनेगा वो? जब हम सारे पार्ट्स को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, तब इसे हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर. Okay. Now we call this computer. Clear this point? Understood this thing? ये सारे पार्ट्स जब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम उस जो भी सिस्टम बनती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर. अदरवाइज जब सब सारे पार्ट्स सेपरेट है तो वी कॉल इट द सेपरेट पार्ट्स विथ नेम. जैसे कि ये मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. लेकिन जब सारे पार्ट्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, देन दिस बिकम्स computer system. Understood this point? Now one more thing I want to tell you, that these 4 parts are the must. You must have this all 4 parts. जब आपके पास ये 4 parts है, then you can do any kind of work with this computer. अगर कंप्यूटर के जो ये मेन 4 पार्ट्स है वो आपके पास है, तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अदर पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ ये 4 पार्ट्स है. यू कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क विद दिस कंप्यूटर. समझ में आया? सो विच 4 मेन पार्ट्स आर देयर ऑफ कंप्यूटर? द फर्स्ट वन इज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड सीपीयू. ये 4 पार्ट्स अगर आपके पास है तो कंप्यूटर आप इजीली और अच्छे से यूज कर सकते हो. ठीक है? लेट्स सी द वन मोर थिंग. नाउ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इट मीन्स दैट I will show you separately all parts and tell you the spelling also of the all parts. Okay, children, are you ready? Okay, so let's see. The first one is a monitor. What is the spelling of monitor? M-O-N-I-T-O-R. M-O-N-I-T-O-R. Monitor. Monitor, you can see. If we no one will call this computer. हम इसे कंप्यूटर नहीं बोलेंगे. मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर कब बोला जाता है? जब सारे पार्ट्स एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तब वो कंप्यूटर बनता है. बट दिस वन, ये पार्ट जो है, वी कॉल इट मॉनिटर. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दिस मॉनिटर? M-O-N-I-T-O-R. Okay, about this monitor and all parts I will explain you in a next part. Okay, so let's see the next part. What is the next part? CPU. Very easy spelling. CPU. CPU is a brain of a computer. Just like in all our head, there is a brain. Okay, just like that, computer also have a brain. And what is the spelling of what it is? CPU. CPU is a brain of a computer. What is the spelling of it? CPU. Now the next one is a keyboard. Why we call this part keyboard? क्योंकि इस पे ये जो बोर्ड है उस पे सारे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स होते हैं. एंड वी कॉल दिस ऑल बटन्स एज अ की. ये सारे बटन को हम क्या बोलेंगे? कीज बोलेंगे. सो दैट्स वाई वी कॉल दिस बोर्ड एज अ कीबोर्ड. Okay, what is the spelling of it? K-E-Y, key, B-O-A-R-D, board, keyboard. Okay, let's see the next one. The next one is a mouse, very small and which is used for drawing purpose. हम इसे किस लिए यूज करेंगे? For drawing purpose. What is the spelling of it? M-O-U-S-E, mouse. Okay, what is the spelling of it? M-O-U-S-E, mouse. This one is a printer. What is the spelling of this printer? P-R-I-N-T-E-R.
T-E-R, printer. Okay, why we use this printer? We use this printer for print all our works which we do in a computer on a paper. हमने जो भी वर्क कंप्यूटर में किया है उसे पेपर पे लेना है तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? प्रिंटर का यूज़ करेंगे. ठीक है. Now the next one. Now in detail. The first part, monitor. What is the spelling of it? M-O-N-I-T-O-R, monitor. Okay, a monitor looks like a television. Monitor किसके जैसा दिखता है? It looks like a television. Okay, now we can see movies and cartoons on the monitor. हम क्या देख सकते हैं monitor पे? Movies and cartoons on the monitor. Okay, and it show us the work done on the computer. हम जो भी कीबोर्ड से टाइपिंग करते हैं that one you can see on a monitor screen. and ड्राइंग करोगे वो भी हमें मॉनिटर स्क्रीन पे ही दिखाई देगी. मतलब जो भी वर्क हम कंप्यूटर में करते हैं with any parts like with keyboard, with mouse, anything. So at that time you can see that work on a computer or a monitor. Okay students, I hope whatever I explain you all understood it. Okay, सबको समझ में आया होगा. Now in the next part I will explain you other parts in detail. Till then, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz everyone. Have a good day ahead.